Hello everyone, my name is Atirav Gupta. My company's name is Lauls Limited, and we are a company primarily diversified into steel industry. One of our verticals is logistics and transportation. We have 250 total vehicles, 3 vehicles out of which are electric and rest are diesel vehicles. We've been running these vehicles for the last 8 months. When this truck was sold to me, of course, there was a big trial cycle that we went through where IPLT had a big task in convincing not only myself but all the stakeholders, maybe the driver, the person who's doing the loading, unloading, the safety teams of plants. And this was absolutely managed very well by their team. And what this has translated into after running the truck is a deep trust for the company. It has been better than we expected. All the estimates in terms of efficiency of electricity or the operational efficiency and the end profitability has been much better than we had planned for. There is a 70% saving of operational costs as compared to our diesel trucks. Trucks have been cumulatively able to clock more than 1 lakh kilometers. This is something that has outstripped our most optimistic of figures, and that is a testament to again the team and the uptime of the truck. It also is a very big factor for us that we've been able to save more than 115,000 tons of CO2 being expelled in the atmosphere. The company benefits primarily from 2 different factors when it comes to the total savings. First is of course the pilferage. In internal combustion engines, we face a lot of pilferages that a transporter of course tries to control as much as possible. In electric, what we have is an absolutely data-driven truck. The kind of telematics that is provided gives us enough knowledge about the trucks to know what is exactly happening, where through the systems that IPLT has given us, we are able to know exactly what is the cost of the truck. With Montra electric Rhino trucks, we have had 99.5% uptime. 99.5% uptime even for a new diesel truck is something which is hard to match. So the preventive maintenance that the team does over here, taking care of the vehicle at all times, trying to monitor it, try to see which parts could be preemptively changed or refurbished or seen what are the issues with it, that really helps to achieve that 99.5% uptime with the vehicles. And of course that uptime translates directly into profits for my company. At any point, there is a single member of IPLTech service team which is available at my yards. The kind of support that the team has provided, I feel that there is absolutely no need, and I can trust the team to make sure that the trucks are on road at all times. And that communication between their team and my team is absolutely seamless. The driver is very, very happy with our vehicles. They are feeling proud that they are running a newer technology. They do not have any need to go to the service center from time to time. The driver is especially thankful for the automatic clutch and transmission that exists in the vehicle because our vehicles run within the city. Therefore, they do not have to change gear at any point. And moreover, the fatigue in this vehicle is much less as compared to internal combustion engine vehicles. The driver is happy also because the vibration in the whole truck is much lesser. It was of course a concern that the trucks are 3 times more expensive than diesel trucks. But once we looked at the operating figures and we had a long-term view over our business, we realized that actually there is no hesitation to buy these trucks because the operating cost is something that's not going to increase over the life of this particular truck, because day in and day out you are earning more than 70% of saving through the operating expense. So I see electric truck only as a win-win-win situation for all stakeholders. I'm perhaps providing my customers with an opportunity to go green in their transportation, and it shows me as someone who's forward thinking in their pool of transporters. Of course, the saving in scope 3 with the ESG norms coming in
that is massive for the customer, and that is going to be a kind of saving that they're going to get repetitively for the next for the life of the truck. Of course, the benefits for the society is something that we do not even need to discuss. The kind of situations and the kind of AQI levels that we read about in newspapers every day. Only technology such as this is going to drive that particular nation forward. More than the truck, I think what it's important at this stage is to look at the kind of people and the kind of ecosystem that is behind the particular model. There is no other product which I could recommend apart from IPLTech for electric trucks. Hi, my name is Naresh Kumar. I am taking care of procurement operations function in Lauls Limited. हमारे पास 200 प्लस व्हीकल्स हैं एंड अभी 8 महीने पहले हमने IPLTech के 3 ट्रक्स खरीदे हैं, Rhino 55 टन। IPLTech Rhino जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा फरीदाबाद से गाज़ियाबाद के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और हम ये टाटा स्टील के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टील कॉइल्स। इसमें क्या हो रहा है, अभी हम लोग पहले थोड़ा सा लिमिटेशंस थी हमारी, वो लिमिटेशन जैसे दिल्ली के अंदर से नहीं जा सकती डीजल गाड़ी, उसका नो एंट्री का भी इशू है। फिर हमें थोड़ा कॉस्ट की वजह से भी नहीं जाना पड़ता था कि भाई NGT देना पड़ेगा, NGT एक अलग कॉस्ट ऐड हो जाता है ट्रिप के अंदर। तो राइनो के साथ ये बेनिफिट है कि हम लोग कभी भी गाड़ी को वहाँ से निकाल सकते हैं दिल्ली के अंदर से, जो कि एक शॉर्टर रूट भी है, तो उसकी वजह से गाड़ी का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया है। तो गाड़ी हमारी तीन राउंड भी ले पाती है एक दिन में, जो कि डीजल गाड़ी एक ही ले पाती थी। IPLTech Rhino का रनिंग कॉस्ट जो है वो 65% कम है कंपेयर अगर हम करते हैं डीजल गाड़ी के साथ। मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे लिए जीरो है, बिकॉज अभी हम लोग अंडर वारंटी रन कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारा लाइक AMC कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ डाउन टाइम। तो डाउन टाइम हमारा बहुत कम है, चाहे वो AMC में हो चाहे विदाउट AMC हो। IPLTech Rhino में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, क्लच पेडल नहीं है, जिसकी वजह से ड्राइवर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उसको फटीग कम होती है वाइल दे आर ड्राइविंग। सो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। हमारा जो ड्राइवर से फीडबैक है इन ट्रक्स में वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, ड्राइवर बहुत खुश हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस को लेके, गाड़ी की पिकअप को लेके, और जो हमारा अप टाइम है दैट इज़ 99%। डायनेमेटिक्स का बहुत फ़ायदा होता है, हम लोग ट्रैक कर पाते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है, भी लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर जब पॉइंट पे आते तो उसका अलर्ट आ जाता है हमारे को, और ट्रिप क्लोज हो जाता है जब एंड पॉइंट पर जाएगा तो वो। तो टेलीमेटिक्स और उससे जो हमारे लिए एनालिसिस के लिए जो रिपोर्ट्स मिलती हैं दैट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। हम लोग सबको रिकमेंड करेंगे क्योंकि एक तो गाड़ी का अप टाइम बहुत अच्छा है, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ड्राइवर खुश है, ट्रिप्स ज़्यादा लग पा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर के लिए तो बेनिफिशियल है ये सब चीज़ें। ये एक इंडिविजुअल के बेनिफिट की बात होगी, दूसरा इन्वायरमेंट का बेनिफिट भी है, तो कार्बन एमिशन हमारा कम हो रहा है इसकी वजह से। नमस्ते, मेरा नाम राहुल प्रजापति है। लॉल्स कंपनी में टाटा स्टील के लिए स्टील कॉइल मैं पिछले 8 महीने से रैनो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ। डीजल गाड़ी की तुलना में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, इसमें क्लच नहीं है और ट्रैफिक में चलने के लिए काफ़ी अच्छा है। ऑटोमेटिक गियर है और केबिन इंजन नहीं है, इंजन न रहने के कारण केबिन हीट नहीं होती और ट्रैफिक में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ इंजीनियर 24 घंटे रहते हैं IPLTech की तरफ से। जब हमें कोई दिक्कत तो पहली बात आती नहीं, जब हमें कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत फ़ोन करते हैं, 10 मिनट में हमारे यहाँ इंजीनियर आ जाते हैं। मैं राइनो इलेक्ट्रिक गाड़ी से बहुत खुश हूँ, इसमें पावर, पिकअप, ब्रेक बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम है अरशद खान, मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। पहले टाटा की चला रहा था 55 टन की, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चला रहा हूँ। डीजल गाड़ी से बहुत बढ़िया गाड़ी है, 2 कोयल लेके आराम से चली जाती है। इसमें ऑटोमेटिक गियर है, अपना आप गियर चेंज होते रहते हैं। इसमें जो क्लच पेडल नहीं है, बहुत फ़ायदा रहता है। गियर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, अपना आप गियर चेंज हो जाते हैं। मैं लॉल्स प्राइवेट लिमिटेड में 8 साल से काम कर रहा हूँ। स्टील का काम करते थे, इसमें गाड़ी पे लोड करके लेके जाते थे। राइनो इलेक्ट्रिक ट्रक ये मैं 8 महीने से चला रहा हूँ। गाड़ी में 2 स्टील कॉइल जाती है, मैनुअल पता ही नहीं चलता है। इस गाड़ी पे मतलब लोड ले रखी है पर लगता है कि मैनुअल खाली गाड़ी चल रही है। इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्लच पैडल नहीं है, इसमें मुझे गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैनुअल ये ऑटोमेटिक गियर लेता है और पुल चढ़ाई हो, घाटी हो, उस पर मतलब खींचते चली जाती है गाड़ी। मतलब जैसे कि कोई घाटी पे हमारी गाड़ी रोक रहा था तो गियर लॉक करके भी हम चला सकते हैं। इंजन ना होने के कारण गाड़ी गर्म नहीं होता है और आवाज़ भी नहीं आता है।
गाड़ी चार्जिंग होने में 1.5 घंटे का समय लेता है 100%, और 100% चार्ज होने के बाद ये 150 किलोमीटर गाड़ी लोड चलते हैं।